चालीस जना है अब जो मैं तुमने बताई थी If anyone wants to donate, that's all. Not necessarily a must. This is a party of four. Reshma Shah? Yeah. So are you Reshma Shah? પેલું ઉપર બી ફ્રેમ છે ને એને જરા સીધી કરો જો થાય તો સહેજ વાંકી છે હા બસ that's it. જેવીબી અને બીજે ક્યાં જવાના છે? જેવીબી અને પછી 3 ઘર છે. એ ઘરના નામો નથી ખબર છે? રાગીનીબેન, લલિતભાઈ અને દેવી. રાગીનીબેન, રાગીનીબેન, લલિતભાઈ, લલિતભાઈ અને નીરુબેન અને દેવદઈ જૈન. પૂજે ઓ थोड़ा लेट आया अभी आओ चलो हमने उदय भाई जय जिनेंद्र कैसे जय जिनेंद्र कैसे हम दोनों के भी जरूर आओ ओके वेलकम टू टेम्पल ऑलराइट Welcome to Maui Bhagwan. उदय भाई आप भी आ जाइए उदय भाई उदय भाई के साथ उदय भाई को भी साथ इन दोनों का मसला एक अच्छा सा ले लो या दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. बोलो दिन शासन बोलो दिन शासन अरे का मैं जान लो मोटो करो को कपाल मम्मी क्या તમે ઓકે હવે કહી દો તમારું નામ શું? રાગીનીબેન અને મારું નામ રાગીની સરોજ સરોજબેન ઓકે હવે નો કન્ફ્યુઝ ઓલરાઈટ થેન્ક યુ એટલે લાસ્ટ ટાઈમ ઘણી વલ્લે ઓળખી જયશ્રીબેન आज હું પકડાઈ ગયો યા आपको सामान नहीं सहायता है जो कोई करा सकते हैं पूरे पूरा ये बोलेंगे ठीक है ना इच्छा करने से सब में देखो ये बताओ इच्छा इच्छाएं बढ़ेंगी क्रिया के विधान गमन को पाने के लिए कमने है कमने ओसा होगा पाना के लगा मट्टी मकड़ा संतान से कमने जेमे जीव है एक इंडिया चौदिया पंचदिया अभी होती है गया संगठन प्रिया कामी होती है खाना राम संगम जीव है तो समझा नहीं रस उद्रीकरणम पायक्षिकरणम विश्वीकरणम विसलीकरणम पावनम प्रमाणम निगम जान का शुरू अन्नत उसस्यनम निसस्यनम खास्यनम क्षयनम जमायनम उद्रीकरण सागरम वायस उद्रीकरण भवन अन्नत उसस्यनम निसस्यनम खास्यनम क्षयनम जमायनम वायसनम भवने पर तुमचाय सुमे में संचालन सुमे के संचालन सुमे के संचालन एवं वही है ये आकार है अब को रहते हो रावण नाम भगवान 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 स्वयं वो सारा कौन होता चार पंचमंदे संभव वेणंदं सुमैंच प्रमुख सुभासम जिनच चंद पावने सुवेंच पदंतम सील सिजन सवास सुविजंच विमोदं चितं धम्मं संधि जीवनामि कुंतु वंच मल्नि वंदे मुनि स्वयं नवजिं चंदामि त्रमि पासं दवदमानं च एवं मयोधा विहरमला पहेजमना 24 पिजनला तिथामि वसेंदु कित्यवनि मय्या विलो बसो तुमा सिद्धा आरो बोलवन स्वयं मुत्मन्दितु चंदेशु वलना अचेशु मेसला सागरमेला सिद्धा श्री बोल सिंधु इच्छामि कुमासो
इच्छामि गुमासोऽन्यते तस्याय तेन वदामि इच्छामि गुमासोऽन्यते तस्याय तेन वदामि इच्छा कारण सिंधु भगवान चेतो मुक्त अब बोलो
Local Chaitya Paripati, 5 different tirth, local we're going to. And we also have 5 sons coming here, which we are welcoming. That's a very auspicious event. And we're going to announce their names quickly. We will recognize them first. The sons coming in will be the first ones being recognized. We have also Sanpati defined today. I'm going to announce their names, so they should come in the front and help. Bolo Jina Shasana. देव की जय. ताली में 50 नहीं रखो. हाथ दे रखो. Right, this is my mother, person Ben Shantilal Mehta, and she always wanted to do the Chaitra Paripati. Jayesh Bhai gave her the love to do this, and thank you very much. Thank you for joining us. Rajesh Bhai could not make it because he had to work today, unfortunately. Yes, right. So we'll take care of him separate, but come join us, please. Go on stage. So this certificate of appreciation reads, let me just read for both of them. Members of Jain Sangh appreciate your wonderful support of the Chaitya Paripati event held today. On this day, we had 5 sons from various areas got together. Our sons celebrated Panchatirth Yatra locally. This is giving them now, but over the day it will actually be recognized fully. Such auspicious events are only possible with great support from you and your family members, for which we are very grateful. Please accept our sincere appreciation for sponsoring, hosting, and supporting this program. This event will be remembered as one of the greatest events, leaving signature footprints in the soul and the spirit of everyone who participated. We're going to recognize different sons that came in over here. And Mayur Bhai, please come forward. Those are the 2 leaders right now. Both of them have helped us build a son. And really welcome them. Sangma, five sang bhiga thi sake everything. That's a very good thing. I'm so happy to welcome them. I used to live in Austin about 10 years roughly, and we built the Sangh from grounds up. There were a lot of activities, but there was no real Sangh organization set up. So we did the non-profit organization with the help of several people, and those are the 2 pioneers. Mayur Bhai was the first secretary, and Rajiv Bhai was our first president. Bolo Jina Shasana. देव की जय. Next song is from Daz. Devang Bhai Jageri, and who else is with him? Samir. Please come forward. Rajan sir. Rajan, yeah. Welcome here. Good to see you. Bolo Jina Shasana. देव की जय. Now, Dallas is also one of the signs, part of mine, I call it, because I lived there. And I worked with several Sangh members there. When they wanted to build a new temple, I was partner in that process from early on. And Dilip Bhai and a whole group of people up there, some of you know already, who has done an excellent job. They bought the property there now. So if you do visit, go visit that area. There are 2 temples right now. The new one is actually, they got it for $1. Swaminarayan Temple gave them for $1. And that facility is over and above and beyond. So please do visit when you get a chance. Thanks for coming here, really joining us. I know we have 2 other sons going to join us, I guess, later on. Is that true? At JVB, right? Because I could not make it here. From Waco, Kirit Daftari is coming. And from San Antonio. He could not make it this morning. So he could not. And where is the Wisconsin family?
They're here. So that's the third son. Come on, please join us. I didn't get your name. Devendra Bhai, welcome. Nice to meet you. તમારું કોઈ આવે છે જોડે? That's okay. So Devendra Bhai Modi is here from Wisconsin son. We have three here. One more will be joining there, and Waco son will join in JVB. So welcome, Devendra Bhai, and really look forward to seeing him more over here, I guess, periodically to visit us. Bolanya Sasana. દેવ કી જય. अच्छा હવે પ્રોગ્રામ છે એવો કે just so you can all see it. Before I start, just wanted to say one thing. Sun is considered two things actually. One is 25th Tirthankar. So we should start like with, program starts with Pujan Vandan for the Sangh itself. So Sanghને સાદર પ્રણામ પહેલા સૌને અને બીજું સંઘ એક જંગમ તીર્થ કહેવાય. જેમ પેલું આપણે સ્થિર તીર્થ હોય અહીંયા જેમ ફિક્સ હોય એની જગ્યાએ સંઘ એક ચાલતું તીર્થ કહેવાય. એમાં જે બધા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ સાધુ સાધ્વી હોય આપણે ઇન્ડિયામાં અહીંયા તો છે નહીં, પણ that is considered also one of those તીર્થ. સો આપણે તીર્થને પણ વંદન કરી શકીએ. એ ભાવથી આપણે આજે શરૂ કરીએ અને કોઈ પણ જાતની આપણને આંચ ના આવે આખા વર્ષમાં કે ભવિષ્યમાં એવા ભાવથી આપણે શિવમસ્તુ કહી અને મંગલ કહી પાછા આપણે નીકળશું અહીંથી 5-10 મિનિટમાં. જેને જેને નાસ્તો બાકી હોય એ નાસ્તો થોડો એમાં કરી લે. બહુ ટાઈમ નથી આપણી પાસે. વી હેવ વેરી લિમિટેડ ટાઈમ. વી કેન મૂવ ફાસ્ટ. ધ બસીસમાં જેની પાસે પાસ ન મળ્યા હોય, નંબર ન હોય, પ્લીઝ ટેક ધ બસ નંબર્સ numbers for the seats. Seats can be changed when you go inside. Don't start it, okay? Don't start it. Don't. And लाइन में यहाँ पे पांचों आप लोग खड़े रहोगे. And मुक्ता खाली थाली चाहिए. खाली उसमें टिक्का. हाँ नहीं आपकी और दो चाहिए. नहीं मैंने मतलब टाइम पे लिया मेरा शुरू से आफ्टर वी आर डन. Yeah, first then, right?
હજુ બરાબર અવાજ નથી આવ્યો. બોલો જીવે શાસના. सब ठीक है. बोलिए. वैको संगीत है. वैको. बंदामी आप नवकार मंत्र से प्रारंभ करें और फिर हम ध्वजा आरोहण करेंगे. वंदामी नमः स्वामी. ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय. Please do the honor. Flag. नारे. बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय. श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय. 1 2 3 4 जय धर्म की जय जयकार. 1 2 3 4 जय धर्म की जय जयकार. 1 2 3 4 जय धर्म की जय जयकार. जब तक सूरज चांद रहेगा जिन शासन का नाम रहेगा. जब तक सूरज चांद रहेगा जिन शासन का नाम रहेगा. वंदे मातरम. वंदे वीरम. वंदे वीरम. वंदे वीरम. जैन धर्म की जय. सत्य धर्म की जय. अहिंसा धर्म की जय. मानव धर्म की जय. संयम ही जीवन है. संयम ही जीवन है. આજનો દિવસ કેવો છે? સોના કરતા મોંઘો છે. આજનો દિવસ કેવો છે? સોના કરતા મોંઘો છે. जैन धर्म का झंडा प्यारा परमेश की पहचान. स्वाल सुरक्षा देने वाले पांच रंग वरदान. जैन धर्म का झंडा प्यारा परमेश की पहचान. शौर्य सुरक्षा देने वाला पांच रंग वरदान. स्वस्तिक बने सदा शुभकारी दर्शन ज्ञान चरण. परस्परोपग्रहो जीवाना जयतु जिन शासन. जैन धर्म का झंडा प्यारा परमेश की पहचान. शौर्य सुरक्षा देने वाले पांच रंग वरदान. Thank you. Sorry. आगे भेजते जाओ. आगे. स्वागत
वेलकम एवरीवन। आज का प्रोग्राम हम नवकार मंत्र से शुरू करेंगे। मैं आदरणीय सभी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवकार महामंत्र का उच्चारण करें। सावधान, रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय।
Thank you, Arun Bhajan. At this time, I would like to call upon Swatantra Ji, Chairman of the JBB Board, to welcome the Sangh. Thank you, Vivek. I'm so delighted and very happy to see you all among us. Let me first say Matha Vandami to Acharya Mahaprabhu Ji and Acharya Mahashrama Ji for their blessings always with us. Respected Swami Parimal Pragya Ji, respected Swami Amit Pragya Ji, Vandami Namo Swami. Dear all Sadhak, Dharmik, Bhaiyo और बहनों, Jai Jinendra. I'm so excited and delighted to see you all here on this auspicious day. I would like to extend a very warm welcome to all of you on behalf of Preksha family. Very first time today we are welcoming 5 sons and their respective sanpatis. We are all very excited about it. Last week at our meeting, all of us were worried it's going to be a very cold day, but with God's grace, what a beautiful day it turned out to be. As Charka Paripati, temple yatra means pilgrimage to holy places, showing respect, devotion, prayers and meditation. I had to find these meanings because I was not aware, what Charka Paripati is there. I'm glad Preksha Center is one of that place. We are very fortunate to have our respective Samijis here every day in this beautiful center with Pyramid Hall and a beautiful temple. I am very proud of the executive team and volunteers who have been supporting our President Vivek Jain. My sincere appreciation to each of you for your hard work and dedication. I would like to announce the names of each and every one of you, but time is short and list is long. Once again, from bottom of my heart, thanks to all the volunteers who took their time and hard work in preparing for this event. Our President Vivek Jain will go over today's program. In closing, I would like to say that Preksha family is always here and we want to make sure your visit becomes today a very memorable, and our hearts and arms are always open to welcome you anytime you want to visit. Thank you, and Swami Guru. And now Vivek. Thank you, Swatantra Ji. Now, I am going to announce the name of the Sangh and Sanpati to please come to the stage and we'll do their Gahana.
And for this, can I also ask Hasmukh Joshi to come here? Kirti Bhai from Jain Society of Houston ke son, please. बोलो जी शासना देव की जय। Arvinda Van from Jain Society of Houston Sunset. Kirti Bhai Dhatri from Lekosan. बोलो जी शासना देव की जय। वो चीज तो मत बोलना है तिलक के पीछे, फोटो के पीछे, सॉरी। Rajiv Bhai Gandhi from Austin Sun. सुख भाई बोलो जी शासना देव की जय। जब शांत पड़ी है भाई, आवाज जो है मोटर से मैं लगाऊं क्या? जय जी। हाँ या लगा ले लीजिए हो गया। Devang Javeri from Dallas Sun. लगा बोला Devendra Modi from Wisconsin Sun. बोलो जी शासना देव की जय। Thank you, Hasmukh Bhai. Thank you, Saraswatan Ji. Next, I am going to call upon Kirti Bhai. आके यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बोलने वाला नहीं हूँ, मेरी बीवी बहुत बोलती है, तो उसको ही बुला लूँ। आप सबका खूब खूब शुक्रिया, आप लोग यहाँ है तो ये हो सकता है। Thank you to Jayesh Bhai and Rekha Ben to arrange all this thing, and thank you to JVB for allowing our entire son to come over here, along with the four other sons coming from different towns. Thank you all.
Radhika Bhen. मैंने जैसे बताया ऐसे मेरी बेटी भी बहुत बोलती है. First of all, I just want to say Vandana Swami, Shamiji, and Jai Nandra to all of you guys. I was speechless, when we entered the JDB and everybody, all of you guys, welcome us. It was wonderful, wonderful feeling, guys. It was such a good welcome and open heart. And we want to do the same thing. If you guys visit the Jain Temple, please do come and visit us. And we want to welcome you the same way too. Okay. I'm not going to take too much time. I'm not going to talk too much. Everybody's saying. But I want to say, Jayeshbhai and Rekha Bhen, thank you so much. And from all the JDB and all the Jain Center, it's our pleasure to welcome you guys for all of you. And Jai Jinendra. Kirit Bhai. Well, just as the tradition calls from last now, I become. Jai Jinendra, Jai Prabhu, Om Maranam. I have been associated with Jain Vishwabharati for a long time, and I don't know how North America, so it's a great pleasure for me to be here. But for me, this is the first time we've done Chaitrapati, so it's an amazing experience. Thank you, Jayeshbhai, for including Veko's son to be part of this, and Swatantraji, thank you for making this happen. We also have a small temple in Waco, so any of you who are passing by Waco, though it's a small town, but you will really enjoy it. You are welcome to come and spend a day with us too. Thank you once again. Thank you for inviting us. As soon as I entered, this is really and truly a meditation center. Wonderful vibration I have never experienced. So Jai Jinendra again, and I would like to come again and again for meditation. We go long back. Rajiv Bhai, please. Pranam Suniti. As you can see, I don't have my wife here, so I can't talk. This is my first time in this process, so my first time, I don't represent it. Thank you so very much. This is such a beautiful place. As she said, the vibrations of this place speaks for itself. We go a long way. He was from Austin before. He was from Austin before also. So somehow Austin is part of this whole process. So we just two of us from Austin, but it looks like a sun, isn't it? Being part of all this stuff. So thank you. Thank you, Rajiv Bhai. Devang Rajiv. Jai Jinendra to everyone. Thank you so much for welcoming us from Dallas. We have a lot of folks here, so unfortunately or fortunately I got to represent them, but thank you everyone for your hospitality. And something I wanted to say, I have been part of the Chaitrapati party probably when I was a little kid, and I'm glad that we are doing this in the US so that our children can get exposed to the culture, and really appreciate what you guys do. Thank you. Thank you, Devang. Devendra Modi. Jai Jinendra Swamiji. It was 1980, the two Swamijis came to Milwaukee the first time, and I remember that day. My wife Rita is here. We are very happy to move from Milwaukee to Houston also. First time when somebody just came to US, they had selected Milwaukee as Jain Vishwabharati Center. Because of the climate and being small community, it didn't work out. So,
we were disappointed in one way. But we have contact with Samriddhis for many years, and we are very happy. A lot of Samriddhis have come to our house and blessed our home and have increased the vibrations, and our children also, follow some of the things in religion. So thank you for inviting us. Now we are residents of Houston. I keep telling Naresh Bhai that, but I think somebody was joking that only if we are here for 2 years will be accepted here. Thank you. Thank you, Devendraji. Next, I'm going to ask Sandeep to say a couple of words on this auspicious occasion. Pandagecen Surendrecen Kaushike Par Sansprishi Niravises Manaskayan Sri Veera Swamine Namah Sri Veera Swamine Namah। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, समुपस्थित साधर्मिक बंधुओं एवं बहनों, कहते हैं एक बार आकाश को उदास देख करके धरती ने कहा, आकाश भैया तुम इतने उदास क्यों हो? आपकी गोद में जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, जगत को शीतलता देने वाला चांद है और टिमटिमाते तारे हैं। चांद, सूर्य और तारे आपकी शोभा को सद्गुणित करने वाले हैं, उसके बावजूद भी आप उदास क्यों हो? तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, बड़े वैभवशाली हो, उदासी का कारण क्या है? आकाश ने धरती से कहा, मां धरती, तुम अक्सर सही कह रही हो, 100% जो कह रही हो करेक्ट है, बट मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं जितनी सौभाग्यशाली तुम हो, क्योंकि महापुरुषों के, संत जनों के चरण इस धरती पर टिकते हैं। बंधुओं, इस मायने में ह्यूस्टन वासी बड़े सौभाग्यशाली है कि जहां निरंतर त्यागी जनों की सत्संग प्राप्त होती है, संत लोगों के दर्शन प्राप्त होते हैं और संत लोगों की वाणी सुनने को प्राप्त होती है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? निरंतर यहाँ पे ज्ञान साधना का सुगम सानिध्य आपको प्राप्त है। साधना है ज्ञान योग और भक्ति योग। हम ये कह सकते हैं चित्त परिपाटी एक भक्ति योग का ही रूप है। ज्ञान योग भक्ति के बिना अधूरा है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है और भक्ति स्वयं को पाने का सहज उपक्रम है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, तो बंधुओं भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। और मैं तो ये कहूंगी कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति भटकाने वाली है, संसार समुद्र से पार उतारने वाली नहीं। इसलिए हमारी भक्ति जो हो वह ज्ञान पूर्ण हो। हम जिसकी भक्ति करें उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है और उस स्वरूप को मैं कैसे प्राप्त करूं और एक दिन मैं कैसे उस स्वरूप को प्राप्त करूं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज सारे भक्त लोग यहाँ पे समुपस्थित हैं और सब पूरा चारों तरफ वातावरण बदला बदला नजर आ रहा है। रविवार को हमारा प्रोग्राम होता है, संतपति सभी मेरी तरफ देख रहे हैं इधर, पर आप कभी दिखाई नहीं देते हैं, आज मेरी तरफ देख रहे हैं। सभी के चेहरे देखिए खिलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमुदित हैं, प्रसन्न है, चहक रहे हैं और महक रहे हैं।
क्या बात है, सभी खुश हो या नहीं? लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि सभी इतने खुश क्यों हैं? क्यों खुश हैं? कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, सभी यहाँ मिल गए और सभी एक दूसरे को मिलकर के बड़े खुश हो रहे हैं, देख के बड़े खुश हो रहे हैं। प्राकृत साहित्य में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, अनन्न देश जाया अनन्ना हार वट्टिये शरीरा जिन शासन मनु पत्ता सब्बे ते बंधवा मुनिया। समझ गए होंगे, प्राकृत साहित्य का श्लोक ये कह रहा है, अनन्न देश जाया, अलग अलग देशों में पैदा हुए, अनन्ना हार वट्टिये शरीरा, अलग प्रकार का भोजन करके, आहार करके शरीर को हमने पोषित किया, संपोषित किया। सब कुछ अलग अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा अलग है। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति जिन शासन मनुपत्ता, जिनेश्वर भगवान की शरण को स्वीकार कर ली, वो सारे के सारे से सब्बे बंधुआ मनुआ, वे सब बांधव हैं, वे सब भाई भाई है। जब एक भाई दूसरे भाई से मिलता है बड़ा खुश होता है। ठीक वैसे ही जिनेश्वर भगवान की जहाज में बैठने वाले सभी हम भाई भाई हैं। जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द आता है साधर्मिक वात्सल्य। हमारी बहनों ने आपका वेलकम किया, आरंभ भजन मंडली ने, भाइयों ने भी, और उसमें एक पंक्ति थी आपने सुनी होगी, सात समंदर पार हम सब साधर्मिक भाई भाई। कहां से अपने देश छोड़ करके हम यहाँ आ गए और हम सब साधर्मिक भाई भाई है। साधर्मिक यानी समान धर्म, एक ही धर्म को फॉलो करने वाले, और जो एक ही धर्म को फॉलो करने वाले हम सब साधर्मिक भाई है। आज का शब्द है भाईचारा, और वात्सल्य मीन्स साधर्मिक लोगों के प्रति हमारे भीतर आत्मीय भाव होने चाहिए, हमारे भीतर प्रेम के भाव होने चाहिए। एक दूसरों को देखे तो आप उनका गुणानुवाद करें, आपका उनका अनुमोदन करें, एक को देख करके आप खुश रहें, तभी हमारे संघ की नींव मजबूत हो सकती है और हमारे संघ की प्रभावना कर सकते हैं। धर्म संघ के 4 अंग हैं, साधु, साध्वी और श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी संघ पुरुष के यानी धर्म संघ के दोनों हाथ है, दायां और बायां, लेकिन श्रावक और श्राविकाएं इस संघ पुरुष के धर्म संघ के दोनों पांव हैं, चरण हैं। और आप सब जानते हैं कि चरण गतिशील ना हो तो हमारा धर्म संघ गतिशील नहीं हो सकता। यदि धर्म संघ की जैन शासन की प्रभावना करनी है तो हमारा श्रावक समाज मजबूत होना चाहिए। हमारा श्रावक समाज के ऊपर पूरा दायित्व है जैन धर्म की प्रभावना करना, और जैन धर्म की प्रभावना तभी संभव होगी कि हमने अपना देश छोड़ा लेकिन हम अपनी संस्कृति को न छोड़ें। हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा आचार और विचार शुद्ध हो, तभी हम धर्म संघ की प्रभावना कर सकते हैं। अन्यथा हम जन्म से जैन है लेकिन कर्म से जैनी कहलाने के अधिकारी नहीं है। कभी कभी सुनते हैं और दुख भी होता है कि समनी जी केक बनाते हैं तब अंडा यूज करते हैं, अंडे का जूस यूज करते हैं। अरे अंडे के जूस के बिना भी तो केक बन सकती है, तो कहते हैं सॉफ्ट नहीं होती। क्या आप केक को सॉफ्ट करने के लिए अपनी संस्कृति को बेच दें, अपने संस्कारों को बेच दें? जैन धर्म के जो मूल संस्कार है, हमारा मूल जो दायित्व है वो मूल श्रावक समाज पर है। यदि हमारा श्रावक समाज, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग मजबूत हैं तो धर्म ध्वजा और धर्म संघ जैन शासन की प्रभावना हम दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। तो अपेक्षा है यहाँ रहने वाले सभी भाई बहन, हमारा आचार, हमारा विचार शुद्ध रहे। हम कहीं किसी भी देश के रहे लेकिन एक दूसरे से मिले, हम गले मिले, आत्मीयता
उत्साह के साथ मिले, प्रेम भाव बरसे, आंखों से करुणा बरसे। ऐसा नहीं एक को ऊंचा देखा तो ईर्ष्या हो गई, एक को बढ़ते देखा तो जलन हो गई, ऐसा नहीं। भगवान महावीर ने कहा, और आगम का उस उक्त के साथ में अपनी बात संपन्न कर रही हूं, अम्मा पीयू समाना। कितना बड़ा दर्जा दिया है। श्रावक और श्राविकाएं माता और पिता के समान है, तो हमारे माता पिता के समान आपको दर्जा दिया है। उस वाक्य को, इस उक्त को हमेशा अपनी स्मृति में रहे, स्मृति में रखें। और मैं जैनी हूं, मैं श्रमणों हम, मैं श्रावक हूं, मैं श्रमणों का उपासक हूं, ये बात हमारे स्मृति में रहे, तभी हम आत्म कल्याण की बात सोच सकते हैं, स्वदर्शन कर सकते हैं, आत्मदर्शन कर सकते हैं। प्रभु महावीर ने कहा, हमें किसी की शरण स्वीकार करने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। एक दिन हम स्वयं महावीर बन सकते हैं। तो मैं मंगल कामना करती हूँ, शुभ कामना करती हूँ चैत्य परिपाटी में आए हुए सारे साधर्मिक भाई बंधुओं के प्रति और आपका वेलकम करने वाले जेवीबी भाई बंधुओं के प्रति मैं यही मंगल कामना करती हूँ। दोनों सब संघ, पांचों संघ और छठा संघ, ये 5-6 कह दो, सबके प्रति मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि एक दिन हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त करें, हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने, हम भगवान महावीर की सिर्फ जय न बोले, भगवान महावीर ने जो कहा उसका भी हम अनुपालन करें। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे जैन आचार बोले, विचार बोले, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ शुभ कामना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। हम आपके आभारी। Thank you, Swamiji. Next, I'm going to call Jayesh Bhai. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। I'm not hearing it back clearly. जय जिनेंद्र। पूज्य स्वामी जी, वंदना नमः स्वामी, स्वतंत्र भाई, अवेक भाई, and the families of JVP really appreciate it for giving us an opportunity to visit you. And also this program takes a lot of effort. I know they had to change their program to accommodate us coming in. So for any inconvenience we caused, I just want to ask first Michami Vikram. I know you have normally a lecture on this day, Pravachan, on this day. So some of the people may miss it because of us coming in. नहीं मिच्छा में तो हम सारा लोग भाई बात से नहीं करते, भाईचारे भाई क्या इससे बड़ा क्या है? Thank you so much. Achha, I'm going to just announce a few things quickly. We're very limited time, so we're going to wrap up from here. We're going to go into temple, do the Jaitilanda in a few minutes. Just let me read the appreciation letter and then take it from there. Also, I want to recognize getting 5 cents together is not a simple thing, especially in US. 6. Actually, total 6 now, including JVP here. I know my wife wants to speak, but that's okay. Jain Society Houston, Pujya Swamiji, and Jain Vishnu Bharati Houston family, JVP family. Members of Jain Sun appreciate your wonderful support of the Chaitanya Paripati event held today. On this day, we have 5 sons from various areas getting together, plus JVP. Our sons celebrated Panchatirth Yatra locally. Such auspicious events are only possible with great support from members, for which we are very grateful. Please accept our sincere appreciation for sponsoring, hosting, and supporting this program. This event will be remembered as one of the greatest events, leaving signature footprints in the soul and spirit of everyone who participated. Swatandra Bhai,
हाँ आलोक जी। आलोक भाई, जो आपके बड़े भाई साहब उन सबको बुलाइए। सकल संघ को पहले पूजन बंधन, क्योंकि 5 संघ इकट्ठा होना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ 6 is only here. 6 is dear son. 5 is one. हम होस्ट है ना, आप लोग गेस्ट है इसलिए बोल रहे 5। आप तो गेस्ट ना होस्ट। हमारे लिए तो सब गेस्ट सब होस्ट है। अच्छा, Kirti bhai, thank you so much for helping us out with this Sankipati process and also taking the 5 sons plus 1, which is sitting here with host together and helping us out. From entire JSH, we have gotten a great response. We have brought in a lot of gifts for you, for the children who goes into Pathshala, and also there are also some donations. From JSH, we are announcing $251 donation to JVD. There are further checks also coming besides our own check coming from JSH, marked for JVB on this occasion. They will be also sent to you in a proper envelope, so you can receive it with proper process on it. Rajiv Bhai Gandhi, thanks for coming in from Austin. Kirti Bhai Daftari, he was previous Jaina president, many of you probably know him. Excellent support from Waco and outstanding work there. Every time we have a lot of dignitaries come in, he always also invites them too. So we are fortunate to have him over here. Devang Vijayagiri from Dallas, and also Devendra Modi, welcome here. I know we didn't get a chance to welcome you all at our JSH because some of you didn't direct here. So thanks again for coming and joining us. Really, really appreciate for this State Party participation. Thank you so much. We now will be moving into Chaityavandan ceremony, and I'm going to give it to Vivek Bhai in 1 minute. After that, we're going to have a lunch over here. Please try to maintain orderly fashion as much we can, so we can manage these things because we have limited time. 12:39, we'll be leaving out of here. So buses will be loaded within short time. Thank you. Thank you, Jayesh Bhai, and thank you to the Society of Wisdom for all the wonderful gifts they have got from the kids for Gyanshala. I'm sure they are going to appreciate that. I'm not going to keep you longer out here. In the end, I just want to announce a couple of things. We have books and CD as a small token of appreciation from JVB Center. So after you are done with your lunch, when you exit from the main building, please take one per family. आज का धार्मिक वात्सल्य का लाभ हसमुख भाई जोशी की तरफ से है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। To end this, I'll ask Sami to do tell us the Mangal Path. So please everybody. हाँ, मंगल पाठ सुनाने से पहले जयेश भाई का प्रोग्राम थोड़ा हम लोगों ने इधर-उधर कर दिया, ये मन में आया हो जयेश भाई, क्योंकि इनके ऐसा था कि कहीं और जाने का था, कहीं और जाने का था। हमने कहा कि देखो हमारे तो प्रोग्राम संडे का होता है, यदि प्रोग्राम में आएंगे तो बच्चे भी देखेंगे, और यदि आपका यदि ऐसा मैनेज होता हो तो आपने सहजता से स्वीकार किया, इस बात को एक्सेप्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुनिए मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो।
소인저 복고단담 시어신전 서마수부전전 요원단치전 담범선디 정남인 군토만저말링 만대무리 수원원년 정담의 정인 화성도저말은저 대범매주도와 의뢰의마나 베네타마나 저기선비누라 이태라의 무생도 기띠원님이야 제여로에서 웃더마 시ද්ධ아르로 서마이바른 무토문딘도 전대신으로라 아이체수연배에서나 사가를 전부다 시ද්ධ아르로 모르셨고 저희 이한티콘의 제시하는 아우레체 제비님한테 티콘을 가라오지. Does anybody want to do safety or not? We'll have someone who will sing with you. नहीं आता है तो कोई और नहीं help कर सकता यावन्ती जयाय उडे
यू वेलकम। How are you? Good. How are you doing? थोड़ा बच्चे के Would you like some? मोना ही हटाइए एक मिनट आइए। ये तो सर कटा रहा है। ऐसे उठा ले, इतने से में क्या आता करेगी? ले लो। अभी पहचानो मुझे, पहचानो। हाँ बिल्कुल। अब तो आपको कभी अब तो कभी नहीं भूलूंगी आपको, उधर देख लिया ना मैंने। कल वीडियो बना रहे हैं तो सुनो, खाना बहुत बढ़िया है। बट आप एकदम रितु जी। Hello. हेलो, व्हाट्स अप बेटा? We are having so much fun. Thank you for capturing all these great moments. ચાલ લડ્ડુ આપું અને સાહેબ તમે આવો ને જમવા. खाना खा लिया लेकिन चाहते मुझे कारण के आम करो मुझे अच्छा अच्छा तो नेरे ना समझी भाई का खबर मुझे खाओ खाना खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं।